Good morning friends, I am Anushka Raj and we are going to continue our biology session, that is reproduction in plants. Okay, in the previous video we studied about the fission, that is a type of asexual means, and in this video we are going to study about budding. Okay, so if you want to see my previous video, I will just provide the link in the description box. Okay, so today we are going to study about budding. So let us start budding in a detailed way. Okay, so let us go ahead and start what is budding. Okay, and so budding, you can understand budding by its name only. Okay, bud, can you understand what is bud? Bud is an outgrowth. What is bud? Bud is an outgrowth. Bud हम लोग किसको बोलते हैं? Outgrowth को. Okay, this outgrowth will again will mature and then actually it will detach from the parent organism and it will leave individually. Okay, so budding, bud means outgrowth. Okay, you must remember this. Okay, so let me give you an example. Budding example is Hydra and yeast. Okay, so I hope so you all know what is yeast, because your mother, whenever she bakes cake, she must use yeast. Okay, so you all know what is yeast. Let me tell you about Hydra. Actually, Hydra means it is actually it is a sea plant. Okay, it's a sea plant. It's a sea plant. Hydra is a sea plant. Okay, actually it is a multicellular organism, but its body structure is very simple. Its body structure is very much simple. Actually हम लोग का body structure कितना complex है? Actually we are multicellular organism and our body structure is very complex. But Hydra's body structure is very simple. That is why we call Hydra as simple multicellular organism. Okay, so let me just write it down that it is a simple multicellular L-U-L-A-R multicellular organism. So it is a simple multicellular organism. Understood? Hydra, what is Hydra? Hydra is a sea plant. It is a simple multicellular organism. Okay. So you must know that budding is Hydra as well as yeast show budding in them. Okay. So let us first see how Hydra reproduce. Afterwards, we are going to see how does division occur in yeast through budding. Okay. So before we are going to start about Hydra, let me tell you about fungi. Okay. Let me tell you something about fungi. Then we will start about division in Hydra. So, do you know what is fungi or fungus? Do you know about fungus? Actually, fungi is a plural form of fungus. It's a plural of fungus. Understood? It's the plural of fungus. So, actually, fungi can be broadly divided into unicellular as well as multicellular. So, what do you mean by this? कि fungi जो है वो unicellular भी हो सकता है. That means it can be one-celled fungi also, or it can be multicellular also.
So it is unicellular as well as multicellular. Okay, multicellular. Okay. So, do you know what is the example of unicellular fungi? I am telling you all about this fungi because we have some uses of this fungi. Okay. So, do you know what is the example of unicellular fungi? Actually, unicellular fungi, the example of this is yeast. So, the example of unicellular organism is unicellular fungi is yeast. And do you know the example of multicellular fungi? Example of multicellular fungi is molds. Molds or mushrooms even. Okay. So, let me tell you that this yeast is a baking, actually let me write it down, baking yeast. It is also known as baking yeast. Because this yeast is used in many baking actually recipes, okay? And this molds is actually, the examples of molds is again rhizomas, which we are again going to see in spore formation, okay? So please keep in mind, please make some notes out of it so that it can be useful for you in future also. So example of molds is rhizomas. Understood? This is baking yeast and this is rhizomas. So even we can say that multicellular fungi example is rhizomas, okay? Or even molds also, molds are rhizomas, okay? So let me just rub it off. You can even make, just copy this out. And we are going to study about this yeast. But before studying about the division of yeast, let us study about the division of Hydra. Okay. Let us study the division in Hydra. Division in So as I told you, Hydra is like is a sea plant. Okay. So let us make. I actually don't know how is Hydra looking, but I'm just making this figure. It's actually looking just similar like this. That is what. यहाँ से उसका इस टाइप से टेंटिकल्स निकला हुआ होता है. These are the tentacles of this Hydra. Okay, just assume this is a Hydra. Okay, it's not actual Hydra. Hydra. So as I told you, in Hydra, Hydra shows the budding. Okay, shows budding. So just let me write here budding. So Hydra shows budding in it. So as I told you, bud means an outgrowth, a small outgrowth which when matures, it detaches itself from the parent organism and then live a individual life. Okay. So in this Hydra also, it happens like this only. So there is a simple outgrowth like this. There is an outgrowth in this Hydra. So this is known as the bud or the outgrowth. So you must know that this is the bud or this is the outgrowth. Okay. After this, what happens is that ये outgrowth बड़ा होके इसी में, in this only, it grows. Okay, it matures in the plant, in the
organism only, parent organism only. So how does it look? So when it grows, it matures. This bud has matured. Matured. So bud has matured and grown into an adult. Leave this. Okay. And after that, what happens is that इस process के बाद क्या होता है कि अब ये इंडिविजुअल बन जाता है और ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है. ओके, एंड दिस अगेन डिटैचेस इटसेल्फ. डिटैचेस मींस टू अलग कर लेता है अपने आप को और एक इंडिविजुअल की तरह रहने लगता है. ठीक है, तो दिस वाज द डिवीजन इन हाइड्रा एंड लेट अस गो अहेड विद द डिवीजन इन ईस्ट. सो दैट you must actually please copy these drawings, all those drawings, so that you remember how the division in Hydra occurs. So let me rub this out. So let me go ahead with the division in East. Okay. Division in East. In this division in East, we are going to come across new words like pseudo hyphae. This is a new word for you all. Let us find this word in this particular topic. Okay. So yeast is a small microorganism. Okay, yeast is a microorganism. Let's say this is the yeast and this is the nucleus inside it. Okay. This is the yeast and this is the nucleus which is present inside it. Yeast nucleus. After that, there is a small outgrowth in this yeast, as we have studied in this earlier in the Hydra. There is an outgrowth. Okay, let us make one outgrowth in this yeast. This is the outgrowth. This is outgrowth. This is the bud. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भी डिवाइड होता है, as we have seen in fission. But the difference between this budding and fission is कि budding में क्या होता है कि bud grow करता है. Bud grow करता है, उसके बाद फिर अपने आप को पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग करता है. लेकिन जहाँ की फिशन में क्या होता है, जब अपने आप को बड़ा करता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है फिशन में अपने आप को बड़ा करता है और वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है. टुकड़ा मतलब पार्ट्स में बढ़ जाता है. ठीक है, और वो पार्ट्स ना याद रखना हमेशा, फिजन में जो दो पार्ट प्रोड्यूस होता है डॉटर सेल्स, वो हमेशा इक्वल इन साइज होता है. इक्वल इन साइज ऑलवेज. इधर इट मे बी मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन, हमेशा इक्वल ही होगा. लेकिन बडिंग में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है. इसका जो प्लांट इससे निकलेगा, जो ये आउटग्रोथ निकलेगा, जब इंडिविजुअल बनेगा, तब ये इसके इक्वल नहीं होगा. हम लोग हाइड्रा में भी देखे थे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म बड़ा था और जो इंडिविजुअल उससे निकला था, प्रोड्यूस हुआ था, रिप्रोड्यूस हुआ था, वो छोटा था. ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन बडिंग, दैट द produced young one will not be equal in size to the parent organism, whereas in fission both the parent organism as well as the daughter organism will be equal in size. Okay, so what happens in the next process is that the bud grows and the nucleus also get divided into it. Okay,
Okay, let me just make bud also grows now. That's bud has also grown, and this nucleus is also being divided. ठीक है, और ये इसमें डिवाइड, जब इसमें चल जाएगा न्यूक्लियस तब वो डिवाइड हो जाएगा. Let me show you out. This nucleus has gone into it and this has become like this. और ये बर्ड इतना बड़ा है और ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है. So you can see the difference between this. This is the matured bird or the young one which is produced. Young one which has been produced, and this is the parent. This is the parent organism, this is the young one. So let me tell you one another case in this particular yeast. Yeast में particularly एक अलग case भी होता है. Okay, so that is कि let me just make it out again. I'm just erasing from this one. Okay, इससे हम मिटा रहे हैं. So that I get. I'll just erase everything. Okay. Because I need some space for it to draw. क्या होता है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखा कि बडिंग के थ्रू ईस्ट में कैसे डिविजन होता है, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड मेथड दैट इज डिविजन इन ईस्ट थ्रू बडिंग ओनली. अब दूसरा मेथड बडिंग के थ्रू ही ईस्ट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है देखते हैं. ये रहा अपना ईस्ट, ये ईस्ट है. इसमें क्या होता है, what happens in this, that there's an outgrowth. There's an outgrowth. Okay, this is the outgrowth. After that what happens कि इसमें जब न्यूक्लियस आता है ना, when the nucleus comes there, and when the time comes that it must be detached from the parent plant, क्या होता है ना कि मतलब जैसे इसमें ये ऐसे पर्टिकुलर ईस्ट था, ये मैच्योर कर गया, इसमें बर्ड आ गया. ठीक है, बर्ड को वो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर दिया. अब बर्ड को क्या चाहिए कि वो डिटैच हो जाए पेरेंट प्लांट से. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, समटाइम इट हैपेंस दैट कि इसके डिटैच होने से पहले ही, जो बर्ड है उसके डिटैच होने से पहले ही उसके ऊपर अगेन एक बर्ड आ जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, ट्राई इट. फिगर्स और अच्छे से समझ में आएगा. लेट मी ड्रॉ दिस फिगर. Can you see what I drawn? So big. Okay, this is a very unusual figure. Okay, but this is seen in east. ये देखा जाता है ईस्ट में. अब इसमें क्या होता है कि ये जो बर्ड गिरने से पहले, एक इंडिविजुअल फॉर्म होने से पहले ही इसमें भी एक बर्ड आ जाता है. और एक बर्ड आ जाता है तो ऑब्वियसली ये इसको न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये अब इस बर्ड के लिए ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस बर्ड के लिए ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये बर्ड जो है पर्टिकुलर इससे ग्रो किया है. ठीक है, याद रखना ये सब बात कि ये जो बर्ड है इसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म ये है, ना कि ये नहीं है, बिकॉज ये बर्ड इसके ऊपर ग्रो किया है. ओके, तो ऑब्वियसली ये बर्ड इसको न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये पेरेंट प्लांट बन गया है अब. ठीक है, तो ये इसको न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है. अब क्या होता है, इसके भी टच होने से पहले इसके ऊपर अगेन एक बर्ड आ जाता है और फिर इस बर्ड के लिए ये एक पेरेंट प्लांट हो गया. अब पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया, आई एम वेरी सॉरी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया. अब ये इसको न्यूक्लियस प्रोवाइड, इसी तरह से करते 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 एक चेन फॉर्म कर जाता है, एक चेन फॉर्म करता है. ठीक है, अब ये चेन जो है इतना बड़ा है. ठीक है, अच्छा, एक
हम लोग बडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड बोले थे. ओके, वी सेड अ वर्ड दैट इज pseudo hyphae. There's a similar word which we have read earlier also. Can you tell me which word is that? Think about it. That is pseudopodia. Is it? हम लोग देखे थे pseudopodia, याद है? In my channel we have not seen the pseudopodia, but in the earlier classes we have read about pseudopodia. ठीक है? जैसे एक अमीबा होता है ना, just please forget all these things, just concentrate on in this part. Okay, this is a amoeba. ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे ना कि ये एक फॉल्स फुट निकालता है ताकि ये अपना फूड को पकड़ पाए. ये क्या है? फुट है. इसके लिए पर्टिकुलर अमीबा के लिए फुट है, लेकिन ये तो फुट है नहीं. दिस इज नॉट द लेग. ओके, दैट इज pseudo means false. Pseudo means false and these are the false foot. ठीक है, तो इसलिए इन लोग को बोलते हैं हम लोग pseudopodia. Pseudopodia. Podia means foot, pseudo means false. So these are the false foot. Like that only, let me just tell you out. Like that only, these are the hyphae. Actual में hyphae ना इसी टाइप का कुछ दिखता है. hyphae इस टाइप से दिखता है. Let me just. hyphae कुछ इस टाइप से दिखता है. Remember this thing. ये hyphae है. हाइफे है. Just wait a second. So this is the hyphae. ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग हाइफे बोलते हैं. ये हम लोग पढ़ेंगे राइजोपस में. हाइफे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे राइजोपस में. दैट इज स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाइफे के बारे में. इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर व्हाट इज हाइफे. हाइफे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइफे. एंड आपको क्या दिख रहा है? ये जो चेन फॉर्म हुआ है, द चेन विच हैज बीन फॉर्म्ड इज जस्ट सिमिलर लाइक दिस हाइफे. इस हाइफे से कुछ कुछ सिमिलर है ना ये चेन, तो दैट इज सूडो हाइफे. That is what pseudo hyphae is. Let me just write it fast. Pseudo hyphae. Okay. Pseudo hyphae. Yeah. So this is the chain which has been formed, and this is the pseudo false hyphae. ये हाइफे तो है नहीं. हाइफे कुछ उसका स्ट्रक्चर की तरह लग रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको सूडो हाइफे. सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स, एंड हाइफे स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर. हाइफे लाइक स्ट्रक्चर इट इज. दैट इज व्हाई सूडो हाइफे इट इज नोन. ये हो गया पूरा डिविजन इन ईस्ट. मैंने दोनों तरीके अब बता दिया डिविजन इन ईस्ट का, एंड आई हैव टोल्ड एवरीथिंग व्हाटएवर आई थॉट इट मस्ट बी. So let me end this session over here, and I hope so this is an enjoyable session. So friends, I will meet you in the next video which I will provide. Okay, and in the next video we will study about fragmentation. That will be more enjoyable. Okay, I hope so that this session of budding and all is enjoyable for you all. So let me next session. Bye.